A very good morning to all my dear students and also to the audience. That includes also my staff and some of the other members who were very keen to attend today's session, that is on cybercrime, financial crimes, I would put it as. So, audience, we are all very keen to know, including me, especially when it comes to financial crimes. That is the session which Mr. Sachin Dedhia is going to enlighten us today. Now, when it comes to financial crime, I'm sure quite a few of us, may not be all, would have lost money purely because of the hacking by someone, or maybe when we are linking in the wrong link which is being given somewhere without our knowledge, we start clicking in those links, which leads to we losing our money, and that becomes also financial loss for us, and then we don't know how to get it back. So in order to understand that in future we don't fall a trap to any of this crime, we definitely would like to know more about this from Mr. Sachin Dedhia, who is the resource person for today. Before wasting much time, I would like to introduce, just a second. Before wasting much time, I would like to introduce to you all the resource person for today, Sachin Dedhia. He is an independent cybercrime investigator and also a certified ethical hacker. He is one of the most popular speakers in Mumbai University for the refresher and orientation courses. In 2010, he was privileged to give a seminar in the Raj Bhavan, that is in the Governor's Office of Mumbai. He has also provided training to Mumbai as well as the other various states' police departments. He has also been assisting various other government departments of India with respect to their cybercrime queries. Sachin Dedhia founded Skynet Secure Solutions, a company headquartered in Mumbai, specializes in cyber security and digital forensics. He has successfully conducted more than 500 seminars and workshops across India and enlightened over 1 lakh participants. So today, I, Dr. Rajeshwari Ravi, the director of G.D. Jalan College, welcome our resource person for today, Mr. Sachin Dedhia. I also extend a warm welcome to a resource person and the audience from all our managing committee members. Some may also be attending today's session. And at the end of the session, I request the audience to please ask questions in case if you have any query. Without wasting much time now, over to Mr. Sachin Dedhia. Thank you. Thank you, ma'am. I hope I'm audible. Yeah, you're audible. Yeah, thank you. Thank you, ma'am. Thank you for inviting me, and welcome all the participants. Okay, and just as ma'am suggested, okay, we are going to discuss the financial frauds, mainly with respect to cyber crimes and everything which are happening. I'm sure some of you must have come across some events, some incidents which have been happening. You must be aware what kind of frauds are also, been happening also. So I'll just try to practically demonstrate. If possible, I'll try to keep it more interactive. So I would request if you can also interact. Okay. So the first thing which I would like to ask now, everybody. Yes, ma'am. Sachin, we don't see your video, please. Ma'am, I'll just first share my screen. So I just start my video sometime if my bandwidth is okay. Can you see my screen now, everybody? Yeah, we can. Yeah. Okay. Done. Okay. So now, first question which I want to ask all of you is, everybody knows my name by now, right? When ma'am introduced me, okay, see, there is a general thing is that whenever any speaker is going to be called, what is the protocol that people will say their name as a part of their profile, and after that they are supposed
qualification that he is so and so, like. So I'm just asking all the students, when ma'am introduced me, what did ma'am introduce me as? So ma'am said my name. Okay. After that, the general tendency is whatever whoever be the speaker, unka designations bolo, unka, they talk about their qualifications and everything like that. What did ma'am introduce me as? Anybody? You can put it up in chat. Pooja, sir will be coming on video very soon. Just answer to the question now. Yeah, what was I introduced as? No, not doctor, but yeah, doctor, I would love to have that word before me, but no. Ethical hacker, someone Yes. said. Yeah, ethical hacker. Perfectly right. Investigator, cybercrime investigator, ethical hacker. So both the degrees I have, like I'm a graduate, okay? But I'm actually also certified ethical hacker. Perfectly right. And this is one of the only professions in the entire world where I have to use a word ethical before I can say I'm a hacker. Am I right? Has any other profession ever come and told you I'm an ethical CA or an ethical doctor, या ethical lawyer? बोला है कभी? कोई नहीं बोलेगा ऐसे. Am I right? बट मेरे को बोलना पड़ता है. राइट एंड यू इमेजिन माई सिनेरियो, मैं कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ, 4-5 years बैक. जब भी मैं कोई मैरिज में जाता था, कोई फंक्शन में जाता था, कोई इवेंट में जाता था ना, तो कोई अंकल कोई आंटी आपको पूछता ही है ना कि बेटा आप क्या काम करते हो, व्हाट डू यू स्टडी, व्हाट डू यू डू. तो मैं तो बहुत प्राउडली बोल देता था, अंकल मैं तो हैकर हूँ. सो इमेजिन क्या रिएक्शन आता था. लाइक टू ऑल द स्टूडेंट्स आई एम जस्ट टेलिंग यू, कभी फॉर फन, जस्ट फॉर फन से, नेक्स्ट टाइम अगर कोई भी आपको पूछेगा ना कि आप क्या पढ़ाई करते हो, खाली मजाक में खाली बोल दो कि मैं तो हैकर हूँ या मैं हैकर की पढ़ाई कर रहा हूँ, मतलब आई एम ट्राइंग टू बिकम ए हैकर. हाउ विल दे रिएक्ट, प्लीज टेल मी. क्या इंप्रेशन गिरेगा जब आप लोग पहली बार किसी को बोलोगे कि मैं हैकर हूँ? व्हाट विल कम टू योर माइंड, लाइक इमेजिन. स्ट्रेंज लुक आएगा. परफेक्टली राइट. सी मैं मेरा बोल रहा हूँ, हमें बाद में विजिटिंग कार्ड भी नहीं मिले हैं. ओके. हमें ना मोबाइल नंबर दिया गया है, हमारे साथ बात भी ढंग की नहीं हुई है. 15-20 सेकेंड्स के तो हम लोग सोचते हैं कि इनके साथ क्या बात करूं, फिर हमारे सामने ही फोन पॉकेट के अंदर चला जाता है. Yeah, so interactions are also very less, basically. Now, I'm going to ask you a very simple question. Uh, I'm also allowed to teach hacking. मतलब imagine करो, I'm an ethical instructor. Instructor in the sense, I can teach how to hack. I've been allowed by the government and by the US. हम लोग ethical hacking सिखा सकते. Now I also know ma'am is also over here. Professors and teachers are everybody is also over here. But still, I'm going to ask you this question. How many of you students, if anybody of you were to get a chance to become a hacker, honestly बताना कितने लोगों को हैकर बनना है? अगर मैं सिखाऊं, अगर कोई भी सिखाना चाहे, तो आप में से कितने लोगों को हैकर बनना है? Okay, quite a lot. ठीक है, अब मैं ना क्वेश्चन को थोड़ा रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट कर रहा हूँ. ओके, आई गेट इट लॉट. अब मेरा क्वेश्चन थोड़ा चेंज होने वाला है. हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू बिकम एथिकल हैकर्स? मतलब किसको हैकर बनना है या किसको एथिकल हैकर बनना है, बताओ. मुझे पता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स तो यही बोलेंगे कि सर बस खाली सिखा दो, फिर हम लोग के ऊपर डिसाइड होगा कि हम लोग एथिकल रहेंगे कि खाली हैकर बनेंगे. राइट. You should just get the knowledge. Then up to you how you want to do it, basically. But I understand the curiosities. But now also the last part. Okay, last part. Uh, I will. Now there are so many frauds which are happening. Ma'am also said, आए दिन बहुत सारे frauds होते हैं, financial frauds हो जाते हैं and everything. How many of you would like to? I'm also got one more degree. आपने देखा होगा मैम ने बोला था cyber crime investigator, which means basically मेरा उल्टा डिग्री भी है कि मैं हैकर्स को पकड़ता भी हूँ. दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई मेन जॉब, राइट. Investigations, catching all these criminals, catching all these hackers, those who are trying to bully you, stalk you, blackmail you, या financial frauds. So last part, last question.
कितने लोगों को उल्टा काम करना है, क्या हैकर बनना ही नहीं है, एथिकल हैकर बनना नहीं है, बट हाँ कोई ऐसे उल्टा सीधा काम करता है ना, उनको जाके पकड़ना है बस. Yeah, like you are interested to catch such kind of people, those who do take away somebody's hard-earned money or something like that. So that kind of opportunities I can give you. उल्टा वाला काम हाँ. देखो हैकर तो नहीं बनाऊंगा, बट डिजिटल वॉरियर बना सकता हूँ, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स बनाने में मेरे को कोई तकलीफ नहीं. So those who are interested, okay, in between or at the end of the session, I will also give you some kind of a project or an internship, not a volunteer kind of a job, which will need to help us to catch such kind of people. For those who are interested, okay, catching the cyber criminals. Okay, it's a volunteer thing that will be opening up later on. Okay, so now I'll start with my session. Okay, first tell me, as a hacker, what would you like to attack? मतलब अगर आप हैकर बनोगे, आपको किसी को अटैक करना होगा, तो आप क्या मतलब क्या अटैक करना चाहोगे बताओ. अच्छा मैं आपको इसका आंसर भी देता हूँ, मैं आपको है ना एक I'll just begin to give you a small hints also. I think majority of you youngsters would have seen Harry Potter. हैरी पॉटर देखते देखते हम लोग ग्रो हुए होंगे. आई थिंक यू माइट नॉट बी ए फैन, बट देखा तो होगा ही. एम आई राइट? हैरी पॉटर में मेन विलन का नाम क्या था? नाउ वी कैन से द नेम बिकॉज वो सीरीज खत्म हो गई है, वी कैन से द नेम ऑल्सो. वोल्डेमॉर्ट, राइट? व्हाट वाज वोल्डेमॉर्ट? वोल्डेमॉर्ट ने क्या किया था? इन ऑर्डर टू लिव फॉर इटर्निटी, इन ऑर्डर टू लिव फॉर एवर, ही डिवाइडेड हिज सोल इनटू 7 pieces. आई होप ऑल ऑफ यू रिमेंबर द स्टोरी. उसने अपने सोल को 7 pieces में डिवाइड किया था. Until those 7 pieces are destroyed, he will not be destroyed. I mean, he will not be killed. What was the what was the name given to that 7 pieces? Some fans of Harry Potter, what was the name given to those 7 pieces? He divided his soul into 7 pieces. जब तक वो चीज डिस्ट्रॉय नहीं होती थी, तब तक वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा. Anybody? Horcrux. Now, the diary was one of the 7 pieces. The snake was one of the 7 pieces. Horcrux, if you remember that, right? The Horcrux. The whole 7 pieces was known as Horcrux. अब मैं आपको पूछता हूँ, अब मैं आपको बोलता हूँ कि अगर अगर आप लोग को ऐसा चांस मिले, टू लिव फॉर इटर्निटी, आई वुड गारंटी, आई कैन राइट इट डाउन, दैट पार्ट ऑफ आवर सोल नाउ लिव्स इन ए मोबाइल फोन. एंड आई एम टॉकिंग टू एवरीबडी. यस और नो? हम सबका सोल का एक पार्ट अभी मोबाइल में है कि नहीं है? आपसे मोबाइल अगर मैं 3 घंटे के लिए ले लूँ ना, तो देख लो आप लोग, एक बार खाना छूट सकता है बट फोन नहीं छूटेगा 3 घंटे के लिए. एग्रीड एवरीबडी? राइट? Yes. So now imagine one thing from a hacker's point of view, what would I like to attack? From a hacker's point of view, I would like to attack the phone only. जैसे मैम ने भी बोला था कि आई थिंक मेजोरिटी ऑफ यू और थोड़े बहुत लोगों ने तो अभी गूगल पे, पेटीएम, या बहुत सारे लोगों ने तो नेट बैंकिंग भी शुरू कर दिया होगा फोन के ऊपर. मतलब पहले तो क्या था, खाली कॉल्स आते थे, हम लोग फोटो लेते थे, व्हाट्सएप आ गया, बराबर है, हमारे लोकेशन आती थी. बट अब क्या हो रहा है? अब तो हमारा गूगल पे आ गया, पेटीएम आ गया, मोबाइल बैंकिंग भी शुरू हो जाएगी. ये सुनो, I hope it is clear, everybody. So now everything is on the phone only. So I would rather attack the phone. तो अभी मैं आपको 2-3 टूल्स ऐसे बता रहा हूँ which is a very popular in our cyber crime world. Okay? तो ये देखो, अब मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ. सॉफ्टवेयर का नाम है फ्लेक्सी स्पाई. यू कैन सी माय स्क्रीन ना एवरीबॉडी? फ्लेक्सी स्पाई. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर है. ओके, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर है, स्पाई एप्लीकेशंस बोलते हैं इसको हम लोग. ये एप्लीकेशन क्या होते हैं कि एक बार अगर हमने फोन के अंदर डाल दिया, ओके, तो छुप जाता है. आई रिपीट, एक बार मैंने फोन के अंदर डाल दिया तो छुप जाएगा, दिखने वाला नहीं है. बट फिर बैकएंड में ये सारा डेटा निकालते जाएगा. क्या क्या डेटा निकालेगा? अगर मैंने एंड्रॉइड फोन के अंदर डाला, ओके, तो देन आई कैन लिसन टू योर फोन कॉल रिकॉर्डिंग. आई कैन लिसन टू योर एनवायरमेंट रिकॉर्डिंग. एनवायरमेंट रिकॉर्डिंग मतलब क्या? फोन की आजू बाजू की बातें भी, फोन कॉल की रिकॉर्डिंग पूरी. बाद में आई कैन सी योर फेसबुक मैसेजेस, योर स्नैपचैट मैसेजेस, योर हाई, your Kick, your Instagram direct messages, your Line, your Skype, your Viber, even your WhatsApp messages I can see, basically. Your Google, your Hangout, your Telegram, your Tinder, your WeChat, I can read your email, your Gmail. I can even read your SMS messages. Why would anybody would like to read your SMSs? SMS क्यों पढ़ेंगे आज की तारीख में? मतलब
एसएमएस में क्या है? यस, परफेक्टली राइट। एसएमएस मीन्स ओटीपीज ऑफ द बैंक, राइट? बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, तो एसएमएस भी मैं पढ़ पाऊंगा, ओटीपी भी मैं पढ़ पाऊंगा। बाद में आपका लोकेशन ट्रैक हो जाएगा, एप्लीकेशन की एक्टिविटी, इंस्टॉल एप्लीकेशन। की लॉगर मतलब क्या होता है? की लॉगर विच मीन्स नाउ वट एवर यू टाइप ऑन द कीबोर्ड विल बी नोन टू अस। मतलब आप मोबाइल में जो भी आप टाइप करोगे वो भी मुझे पता चलेगा। तो मैं जो भी आप टाइप करो, तो जो बैंकिंग पासवर्ड ऑल्सो नाउ, आई होप ये क्लियर हो रहा है एवरीबॉडी। सो अभी आप देखोगे एवरीबॉडी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू माय कैमरा ऑन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एडजस्ट इट ऑन सो ऑल ऑफ यू कैन सी ऑल टुगेदर ऑल्सो। बट इसके अलावा भी आपको क्या दिख रहा है? इसमें कुछ बचा क्या? अगर ये सॉफ्टवेयर किसी ने डाल दिया तो इसमें कुछ बचेगा? आई होप ये क्लियर हो रहा है। नाउ यू कैन रिमोटली एक्टिवेट द कैमरा ऑल्सो। अभी मैं आपको ये बोल देता हूँ, दिस सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो यूज फॉर फाइनेंशियल फ्रॉड्स। मतलब अभी आप इमेजिन करो, अगर ये सॉफ्टवेयर मैं आपके फोन के अंदर डाल दूंगा तो मुझे दिखेगा ना कि आपका ओटीपी क्या है। कैन आई ऑल्सो कम टू नो के व्हाट वाज योर बैंकिंग पासवर्ड? यस, बट दिस सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो यूज फॉर व्हाट पर्पस एवरीबडी? इवन फॉर personal reasons, personal purpose also. Husband has got it out on wife has got it out on husband. तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं। आप लोग को आइडिया आ जाएगा कि इंस्टाग्राम अकाउंट अगर हैक करना होगा तो ये वाला सॉफ्टवेयर डालेंगे, फेसबुक अकाउंट हैक करना होगा तो ये वाला सॉफ्टवेयर डालेंगे। लाइक आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग मी एवरीबडी। So majority of the financial frauds which are happening is because of this only. Clear है everybody? अच्छा, अभी नाउ ओपनिंग द क्वेश्चन आंसर सेशंस। ओके राइट, अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आगे बढ़ूं इससे पहले इसमें कुछ डाउट है तो मुझे पूछिए इस पॉइंट के ऊपर। इज इट लीगल? यस, आई विल टेल यू हाउ इज इट लीगल। एक्चुअली इट इज नॉट लीगल, बट बेसिकली ये सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, इन लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग को पेरेंटल कंट्रोल के नाम से भी पेरेंट्स को कंट्रोल करने, मतलब पेरेंट्स कैन मॉनिटर देयर चिल्ड्रन, तो दे आर सेलिंग इट, दे आर मेकिंग इट लीगल। जस्ट वन मिनट। Getting my point? So parents can control their children. I mean, they have a right to do that. Employees can monitor their children also. I mean, employees can monitor their boss can monitor their employees and everything. Okay, getting my point? Sir, can you show one more time from where did it come? You mean to say the application? Okay, the application install कैसे करना है? That is what you want to know, right, Pooja? I mean, if that is your question, well, the application can be installed. काफी तरीके से इंस्टॉल हो सकता है। People will gift you one phone. Okay, आपको फोन गिफ्ट किया जाएगा when you grow up, when you are into relations, या तो जब आपका मैरिज होने वाला रहेगा तब आपको सामने वाला फोन गिफ्ट कर देगा बेसिकली, यू नो। तो फोन एज अ वे ऑफ गिफ्ट, किसी के पास आपका फोन का एक्सेस आ गया थोड़े टाइम के लिए, यू नो, होता है ना बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में प्रीटी कॉमन होता है, फोन एक दूसरे को शेयर करने के लिए दे देते हैं, बस वो 3-4 मिनट फोन हाथ में आ गया, उसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया क्या, देन एंड आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। तो यू नो ब्लैकमेल वाले की बहुत आते हैं, स्टॉक वाले की बहुत आते हैं, एंड बेसिकली, बट फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी की वजह से हो रहे हैं। So I'll just small, I will just requesting you, please read the headline. Just खाली इतना पढ़ो, हेडलाइन पढ़ो। Shall I come down? Okay, just read this one। खाली ये छोटा सा केस स्टडी पढ़ लो।
Done? अच्छा, इस केस में क्या हुआ देखो, मैन इन पवई, तो क्या इनकम टैक्स का कोई रिफंड वाला मैसेज आया, और मैम ने भी पता है इंट्रोडक्शन के टाइम पे ही बोला था कि लिंक के ऊपर टिक कर देंगे और फिर वो फ्रॉड हो जाते हैं। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ दिस काइंड ऑफ फ्रॉड। चलो, लिंक के ऊपर क्या, एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, अब आज उसने वो मैसेज और एप्लीकेशन दोनों डिलीट कर दिया था। आई होप अंडरस्टैंड बेसिकली कि वो फिर भी बैकएंड में तो रन हो ही गया था, राइट? अब आप पूछोगे कि सर पैसा डेबिट हो गया तो ओटीपी तो आया होगा, तो मैं क्वेश्चन आपसे पूछा कि अगर उसको ओटीपी भी आया होगा तो सामने वाले हैकर को ओटीपी मिला होगा कि नहीं मिला होगा? क्लियर हो रहा है एवरीबडी? This is this is how financial frauds are happening online because of such software. So to all the participants, to all the students, लाइफ में मेरी एक चीज याद रखना, मतलब मेरा पूरे सेशन का कुछ याद रहे ना रहे, सिर्फ लाइफ में इतना याद रखना, डू नॉट एक्सेप्ट फोन एज ए वे ऑफ ए गिफ्ट। आई नो ये बहुत टफ है, कि बहुत हार्ड है, बहुत टेम्पटिंग भी रहेगा, बट इफ यू रियली रियली वांट टू प्रोटेक्ट एंड योर योर प्राइवेसी एंड योर डेटा बेसिकली, then do not accept phone as a way of a gift. I hope you're clear on that. No matter how good the client is, no matter how good the boyfriend or the girlfriend is, no matter how good the सामने वाली पार्टी, in-laws, वैसे, एंड आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म यू, काफी सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में हम लोग पीटीए करते हैं, पेरेंट टीचर एसोसिएशन मीटिंग भी होती है। तब जब पेरेंट्स को पता चलता है कि दे कैन मॉनिटर देयर चिल्ड्रन यूजिंग सच काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, देन देयर आर मेनी पेरेंट्स हु वुड लाइक टू नो, स्पेशली अब जब कॉलेज शुरू हो जाएगी, कि लड़का या लड़की जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, साथ बात कर रहा है, कुछ उनका को डाउट है आप लोग को, जस्ट श्योर दैट यू आर फाइन, बेसिकली nobody is trying to or practice what kind of happening. Sometimes we have seen parents also use this kind of softwares basically, but financial fraud point of view से मैं ये कहूँ कि majority of the banking frauds are happening because of such softwares also. Prevention is better than cure. Try not to accept phone as way of a gift itself. Okay, now ask me any other doubts that you have. अभी कुछ doubts है तो पूछिए. Yeah, so this was the question that I was waiting for, कि how do we know if the tool is installed in our phone or not? यही मुझे चाहिए था कि भाई हम लोग टूल डालें या ना डालें, बट किसी ने अपने ही फोन में डाल दिया तो फिर कैसे पता करने का? Am I right? I mean, this is the most interesting thing that you should be learning over here, how to protect our phone. So now, please listen carefully. One, आप लोग क्या करो कि डोंट वरी अबाउट द नोट्स, ओके? आई विल बी शेयरिंग अ लॉट ऑफ नोट्स विद मैम। मैं आप लोग को पीपीटीज और प्रेजेंटेशन वो तो सब मेरे पास बहुत पड़े, वो मैं भेज दूंगा कॉलेज को। अभी मैं खाली प्रैक्टिकली करके बता रहा हूँ, मतलब मैं पीपीटी के थ्रू नहीं पढ़ा था। आई वुड प्रेफर टू कीप इट समथिंग लाइक दिस ओनली। तो पीपीटीज एंड स्टेप्स आई विल सेंड इट टू यू, डोंट वरी अबाउट इट। सो फर्स्ट थिंग्स व्हिच आई वुड लाइक टू टेल यू इज हाउ डू वी डिटेक्ट सच काइंड ऑफ थिंग। पहला डिटेक्शन कैसे होता है कि बस आपके फोन में ना कोई कोई भी एक एंटीवायरस आ देता है, एक वायरस और Scout नाम का कोई एक एंटीवायरस हो सकता है, यू नो। तो जस्ट स्कैन योर फोन यूजिंग सम गुड एंटीवायरस। तो ये कभी कभी ना, ये एंटीवायरस इतने अच्छे होते हैं कि उन लोग ही हमें बता देते हैं कि भाई फोन में कोई स्पाई एप्लीकेशन डाला है। आई एम नॉट सेइंग कि 100% इफेक्ट, बट एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग, एंड योर सम गुड एंटीवायरस। दैट इज पार्ट वन, वन वे ऑफ डिटेक्टिंग इट। सेकेंड वे ऑफ डिटेक्टिंग, दूसरा कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग सब लोग को ये पता होगा, पता है एंड्रॉइड के ऐप के परमिशंस होते हैं, लाइक एंड्रॉइड ऐप परमिशंस, बेसिकली एवरी ऐप विल टेक अ लॉट ऑफ परमिशंस। Am I right, everybody? So, what I need all of you to do is basically go into your settings, go into apps, and then check for permissions. देखो कोई भी spy application रहेगा ना, वो बहुत सारे परमिशन तो लेगा ही लेगा। Yes or no, everybody? तो अभी हमें ये देखना है कि कौन से ऐप ने कितना परमिशन लेके रखा, तो हमें तभी एकदम समझ में आ जाएगा कि बॉस मैंने ऐसा एप्लीकेशन डाला नहीं था, बट वो इतने सारा परमिशन ले रहा है, मेरा लोकेशन, मेरा ऑडियो, मेरा वीडियो, मेरे मीन्स इट इज नथिंग बट ए पार्ट ऑफ spy application.
एंड फ्रॉम देयर आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड, ऊपर एक बटन आता है फोर्स स्टॉप और अनइंस्टॉल का भी, कैन गो अहेड एंड अनइंस्टॉल। बट फिर भी अगर डाउट है, अगर इससे भी नहीं समझ में आता है, तो मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है, फैक्ट्री रीसेट द फोन। लास्ट ऑप्शन क्या है, फैक्ट्री रीसेट द फोन। और अगर थोड़े बहुत लोगों को तो रूट करने को आता है ना, एंड्रॉइड को रूट करते, पता है, इफ यू नो दैट कैन रूट एन एंड्रॉइड फोन, तो रूट कर देना या आईफोन को जेल ब्रेक कर देना। बट अगर आपकी वारंटी खत्म हो गई होगी तो, नो, लाइक वंस योर वारंटी पीरियड इज ओवर, देन यू कैन एंड्रॉइड फोन एंड एवरीथिंग। क्लियर? आई होप द डाउट्स आर क्लियर नाउ। But I'll be sending these presentations also. Okay, don't worry about that. I'll be sending the presentations also. PC maybe I'll also give you the tools. Basically, if you want to, scan your PC for any known malwares or something like that, I'll share the tools also for PC also. Okay, now how to know whether the message is a fraud or not? So I'll just give you a few ideas. Okay, how do we know कि वो message fraud है कि नहीं है? Basically, तो उससे क्या होता है कि जब मैसेज के अंदर कोई लिंक आती है, आई जस्ट डेमो, मतलब लिंक होगी, जैसे सा एग्जांपल, चलो आरबीआई की वेबसाइट का नाम देखते हैं हम लोग। कैन यू सी आरबीआई की वेबसाइट का नाम क्या है एवरीबॉडी? RBI.org.in, दिख रहा है ऊपर, राइट? RBI.org.in। तो अभी देखो एक मेल आया है फ्रॉम आरबीआई, नो रिप्लाई नाम का एक ईमेल आईडी हो सकता है, नो रिप्लाई @RBI.org.in, राइट? अभी एक मेल आया है फ्रॉम आरबीआई जिसमें एक नीचे लिंक दी हुई है, आई वुड रिक्वेस्ट यू रीड द मेल एंड लेट मी नो इफ यू विल क्लिक ऑन द लिंक बिलो और नॉट। ओके, नाउ हाउ डू वी नो वेदर दिस लिंक इज अ फ्रॉड और नॉट? वेरी सिंपल, मैं क्या करूंगा, देखो इस लिंक के ऊपर टिक करूंगा। तो अभी देखो अगर आरबीआई से मेल आई है, ओके, मैं लिंक के ऊपर टिक करता हूँ, जस्ट लुक एट द यूआरएल। आई होप ऑल ऑफ यू कैन सी द यूआरएल वेयर द लिंक इज गोइंग टू टेक मी। सो इज इट फ्रॉड? यस। अगर लिंक सही होती तो मुझे आरबीआई की ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर लेके जाता था ना। बट ऑफ कोर्स वी डू नॉट इवन नीड टू क्लिक ऑन द लिंक। हमें ना सिर्फ माउस को खाली लिंक के ऊपर होवर करना है, जस्ट होवर द माउस ओवर दैट लिंक एट द वेरी, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च है ना, टाइप हियर, यहाँ पे देखो मैं खाली माउस को लिंक के ऊपर लेके आ रहा हूँ, तो नीचे आपको एग्जैक्ट यूआरएल भी दिखेगा। ये पता नहीं अभी आप लोग को इस पे दिखेगा कि नहीं, but if I'm hovering the mouse over the link, you can see the exact URL at the bottom left hand side corner of your screen. क्लियर? हाँ, अभी अभी मैंने माउस को हटा दिया तो लिंक चली जाएगी, सॉरी, और जब मैं माउस को उधर लेके जाऊंगा तो लिंक दिखेगी। So this is one of the ways through which you can identify whether there is a, this is a phishing mail or ये फ्रॉड मैसेज है कि नहीं है। क्लियर एवरीबॉडी? Okay, now I'll move on to the next point. Okay, so now you can see a world map over here, everybody. Now you can see some arrows also been shot. So अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, this is known as the cyber war. मतलब अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो the first world war was fought on land. The second world war was fought on land, water and air. तीनों जगह पे लड़ा हुआ था। बोलते हैं if there is going to be a third world war, okay, the third world war will be fought on land, water, air plus, और किधर लड़ेंगे उन लोग?
If there is going to be a third world war, where will they fight again? Air, water, cyber war, basically. तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, दिस इज ऑलरेडी द वॉर हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. इसको हम लोग बोलते हैं साइबर वॉर. साइबर वॉर इंटरनेट के ऊपर. व्हाट यू मीन बाय साइबर वॉर? साइबर वॉर मीन्स फ्यूचर में जब दो कंट्री अटैक करेगा ना, दे वुड अटैक द फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज ऑफ द नेशन. फाइनेंशियल क्राइम्स ज्यादा करेंगे हम. मतलब अब आप इमेजिन करो, सोल्जर के बैंक अकाउंट के अंदर 50,000 रुपए के बदले सिर्फ 50 रुपए का बैलेंस दिखेगा. तो फिर सोल्जर बंदूक लेके किधर जाएगा? या तो फिर विल ही हैव दैट काइंड ऑफ ए कॉन्फिडेंस, बिकॉज हिज हार्ड एंड मनी हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम द बैंक. आई होप ये क्लियर हो रहा है एवरीबॉडी. डेटा स्टील करेंगे, बैंक बैलेंस ऊपर नीचे कर देंगे, स्टॉक मार्केट को ऊपर नीचे करेंगे, तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड ज्यादा होंगे, फाइनेंशियल क्राइम्स उन लोग ज्यादा करेंगे. मतलब मैं आपको एक छोटा सा मतलब बोलूँ तो ऐसे ना, 25 ईयर्स, 20-25 साल पहले, 20-25 साल पहले अगर मुझे एक बैंक लूटना था, अगर किसी को भी एक बैंक लूटना था बेसिकली, तो क्या क्या करना पड़ता था? गाड़ी लेके आओ, वॉचमैन को पैसा खिलाओ, बंदूक रेडी रखो, तब जाके लूट लूट के सिर्फ एक ब्रांच हाथ में आती थी. आई होप यू गेटिंग मी. एट द रिस्क ऑफ द लाइफ फिजिकली जाके हमें सिर्फ एक ब्रांच में जितना पैसा था उतना मिलता था. एम आई राइट? वो भी कितना रिस्क था, गाड़ी चालू होनी चाहिए, बंदूक में गोली होनी चाहिए, वॉचमैन को ड्राइव करना चाहिए एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग. अब क्या है? अब कुछ नहीं है. अब दूर बैठो, एसी रूम में बैठो, कंप्यूटर पे टक टक करो, एक कटिंग चाय पियो और भेज दो ये सारे लिंक्स, भेज दो मैसेजेस. अब जिसने भी लिंक के ऊपर टिक किया, जिसने भी मैसेज के ऊपर टिक किया, अभी तो बैंक में भी एंटर होने की जरूरत नहीं है. बैंक तो छोड़ो, सिटी में एंटर होने की जरूरत है, छोड़ो कंट्री में भी एंटर होने की. दिस इज टेक्नोलॉजी एंड दिस इज हाउ न्यू एज फाइनेंशियल फ्रॉड्स आर गोइंग टू हैपन. नॉट नेसेसरी दैट अपने लोग तो करेंगे ही करेंगे, बट इवन फॉरेनर्स, इवन बिग बिग कंट्रीज. तो आप देख सकते हो, आप देख सकते हो कि इधर ऑलरेडी अटैक चालू हो चुके हैं. यू कैन सी दिस एवरीबडी ओवर हियर. आप देखो यूएस, ये जो मेरा माउस है उधर यूएस है, पर यूरोप है, इंडिया द ग्रेट, चाइना, अपने ऊपर रशिया, अफ्रीका, सारे कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं. मोर और लेस एक कंट्री आराम करता है, इंडिया. जल्दी कुछ जाएगा नहीं, जल्दी कुछ आएगा नहीं, अपने ऊपर से अटैक आते जाते रहेंगे. क्लियर? सो दिस इज द फ्यूचर. अपनी जनरेशन ऐसा टाइप का वॉर देखेगी. आप बताओ, आप लोग पूछोगे हम लोग अटैक क्यों नहीं कर रहे? व्हाई आर वी नॉट अटैकिंग? बिकॉज वी डू नॉट हैव इनफ एथिकल हैकर्स. अपने जितने भी अच्छे दिमाग है वो सब फॉरेन में है. और अगर मैं आप लोग को हैकर्स बनाऊंगा भी, तो ईमानदारी से मुझे बताइए, ऑनेस्टली मुझे बताना, हाउ मेनी ऑफ योर पेरेंट्स वुड अलाउ यू टू बिकम हैकर्स? आपकी स्ट्रीम कोई भी होने दो, अगर आप बीकॉम के हो, बैफ के हो, कुछ भी होने दो, लेकिन फिर भी यू कैन बिकम हैकर्स, लाइक, बिकॉज आई एम ऑल्सो कमिंग फ्रॉम ए बैकग्राउंड ऑफ बीकॉम ओनली, basically. So if they allow, then it's a very upcoming domain. I hope you're getting me. Because आगे जाके इंडिया अपना खुद का एक साइबर आर्मी बनाएगा. ऑलरेडी प्रोसेस शुरू हो चुकी है बेसिकली. साइबर आर्मी में विल रिक्वायर साइबर वॉरियर्स विल रिक्वायर. सो पॉइंट हियर इज इट इज गोइंग टू बी अ वाइट कॉलर जॉब. मतलब इतना रिस्पेक्ट मिलेगा जॉब के अंदर. पीपल विल लुक अप टू यू विद रिस्पेक्ट एंड फियर बोथ टुगेदर बेसिकली. Okay, but I'm just telling you, there's enough opportunities there. Okay, enough अच्छा स्कोप भी है. नो मैटर व्हाट योर बैकग्राउंड इज, यू कैन बिकम एक्सपर्ट्स और यू कैन बिकम फॉरेंसिक्स ऑल्सो. मतलब अगर चोर चोरी करके चला गया तो आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हो. क्योंकि आज नहीं तो कल इंडिया के ऊपर भी अटैक तो होगा ही ना. जब इंडिया ग्रो होगा, जब इंडिया डेवलप होगा, जब इंडिया वॉर के लिए जाएगा, तो जरूरत पड़ी तो डोंट यू थिंक विल रिक्वायर एक्सपर्ट्स टू डिफेंड ऑल्सो और टू इन्वेस्टिगेट? यस. So there is enough scope in all this particular thing, but I'm just trying to tell you that this is now the new frontiers, cyber wars, financial frauds, all happening across countries also, basically. And see, I hope that is one of the reasons also. A majority of the colleges have also started with cybercrime courses or digital forensic courses or even like and everything. Right? So yeah, you can, if you are interested, trust me, it's a good career opportunities, basically. And to all the students, see, what I would request to all of you is, your ma'am is good. I mean, your college, all this, process of calling people like us and explaining all this kind of topics and domains. To all the students, मेरी एक ही रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, कि जब भी कॉलेज को ऐसा आउटसाइड का सेमिनार रखेगी ना, प्लीज अटेंड.
प्लीज अटेंड, बिकॉज आप लोग को एक घर पे बैठ के एक अपॉर्चुनिटी मिलती है टू नो अबाउट दैट पर्टिकुलर डोमेन। ठीक है, तो मैं तो ऑनेस्टली बोल देता हूँ कि मेरा सेशन खत्म हो जाएगा तो थोड़ी बहुत लोगों को लगेगा कि क्या मैजिक शो था, क्या हुआ समझ में ही नहीं आया, बट मैजिक वॉज वेरी गुड। That would mean that cyber security is not your cup of tea, या हैकिंग या forensics investigations is not your cup of tea, तो fair enough वो नहीं है। बट आपके मैम अच्छे हैं, उनको बोलो कि मैम ये तो अच्छा था बट फिर स्टॉक मार्केट के ऊपर कराओ, इंश्योरेंस के ऊपर कराओ, क्लाउड के ऊपर कराओ, अटेंड, बिकॉज इससे आपका डोमेन क्लियर होगा। बिकॉज इन द फ्यूचर अपनी जनरेशन को है ना, बहुत सारा कंपटीशन या तो लोगों से ही होगा, लेकिन अपना कंपटीशन है ना, अपना कंपटीशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ भी होने वाला है, मशीन लर्निंग के साथ भी होने वाला है और रोबोटिक्स के साथ भी होने वाला है। They are going to take away a lot of skilled, lot of manual jobs away. So our skills really need to be enhanced. I hope this is understandable. I'm not trying to scare you. I'm just trying to update you, what the future lies for us, basically. So if try to dabble out, try to get out of a little bit of a comfort zone and try attend such kind of seminars, workshops with the college is trying to do, basically जा जाके आपका 1 या 2 घंटा जाता है, बट वो इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हमें एटलीस्ट पिक्चर क्लियर होता है कि बहुत कि हमारे लिए ये रूम क्या नहीं है, राइट। And for those of you who want to become, who want to learn hacking or cybercrime or something like that, I'll share my details at the end of the session. You can join us. और या तो मेरी एक सिंपल रिक्वेस्ट है, अगर आपका कोई कजिन या आपका कोई फ्रेंड है जो कंप्यूटर में बहुत कीड़ा है, मतलब एकदम एकदम कंप्यूटर के अंदर जाते रहते हैं और उसको ये पैशन है, then please ask them to contact people like us. Trust me, we can make some good careers for them, or we can really give them some good opportunity, basically. Okay, so scope है, scope सभी में होता है, but you have to decide which domain you want to come in. Okay, now I'll move on to the next point. And don't worry, I'll share all the details. Okay, I'll share all the details. अभी देखो, मैं ना आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर ही हूँ और ये सही वेबसाइट है, आरबीआई की वेबसाइट के ऊपर ही हूँ। ये उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है, देखो इधर, कंज्यूमर अवेयरनेस। अभी ये आरबीआई खुद है, आरबीआई लाइक द द सेंट्रल बैंक, आई मीन, so if they are giving an advisory for financial fraud, then we need to look into it, right? So January 28 को उन्होंने एक एडवाइजरी दी फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। आई जस्ट इंक्रीज द स्क्रीन साइज। सो वील जस्ट लुक इनटू दिस, यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग फटाफट। विशिंग, विशिंग मतलब क्या होता है? एनीबडी जस्ट रीड इट आउट, एवरीबडी। आपको कॉल आएगा, कि भाई आपका आधार अपडेट कर रहा हूँ, आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की लिमिट अपडेट कर रहा हूँ, एंड एवरीथिंग दैट। ट्राई टू लर्न इंजीनियरिंग, बेसिकली। कॉल करेंगे, आपको बोलेंगे कि मैं फलाना फलाना बैंक से बोल रहा हूँ, एंड एवरीथिंग। ओके, फेक वेबसाइट वो फिशिंग वाला है। फेक वेबसाइट विद सिमिलर नेम, दैट इज फिशिंग अटैक। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। स्पूफ्ड ईमेल्स और ईमेल एसएमएस व्हिच आर सेंट। फिशिंग मतलब क्या होता है? फोन कॉल कर रहे हो लोग, फोन कॉल प्रिटेंडिंग टू बी बैंक एंड समथिंग। ओके, एंड फिशिंग मतलब क्या है? वो स्पूफ्ड ईमेल्स भेजना, एसएमएस भेजना, बट वो सिमिलर लुकिंग मेल्स, सिमिलर लुकिंग डोमेन्स एंड एवरीथिंग। नाउ व्हाट यू मीन बाय रिमोट एक्सेस? Anybody remote access, देखो flexi spy is nothing but a remote access only, right? Basically, so getting access to the phone and then getting access to the data. बाद में फेक नंबर्स, मतलब सोशल मीडिया के जब हम लोग गूगल के ऊपर जाके सर्च मारते हैं किसी बैंक का या पिज्जा का या समथिंग लाइक दैट, तो उन लोगों ने जानबूझ के पर्पसफुली रॉन्ग नंबर्स डाले रहते हैं ताकि हमको उनका डेटा मिल जाए करके। सो आई विल शेयर यू दिस आल्सो। देयर आर प्रैक्टिस टू सेव डिजिटल मीडिया, आई मीन प्रैक्टिस सेव डिजिटल बैंकिंग आल्सो, इन्होंने सेफ्टी टिप्स भी दिए हुए हैं। आई विल सेंड द सेफ्टी टिप्स आल्सो विद ऑल ऑफ यू, basically. So, you know, this is how the RBI has given that are the kind of frauds which are happening. ये इनकी मेथोडोलॉजी होती है ये सारी। अभी आपको कुछ और भी चाहिए तो यहाँ पे एक cybercrime.gov.in करके एक वेबसाइट बनी हुई है, where you can actually go and report cyber crimes also, banking frauds, social media frauds. If you don't want to go to the cops, you can go and come and report over here. अब यहाँ पे भी इन्होंने, आप देखोगे, साइबर वॉलंटियर्स भी एक कंसेप्ट उन्होंने शुरू किया है। बेसिकली इस कंसेप्ट में आपको बता दूंगा क्या होता है। रिसोर्सेज भी है, साइबर सेफ्टी टिप्स भी उन्होंने दिए हुए हैं बेसिकली। तो ऑल दिस थिंग्स यू कैन डू। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ईमेल स्कैम एंड फिशिंग का ऑडियो ट्रांसलेट किया हुआ है, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑप्शन कंटेंट, ऑनलाइन स्कैम एंड फ्रॉड। So you get a gist of small ideas as to what kind of frauds are happening. So financial fraud, if I take over here, financial मिल जाएगा, frauds होते हैं, never disclose the safety tips and everything like that.
Clear, everybody? Okay, now I would like to talk about one voluntary thing which I would request from all of you. If you want to join us, it's a completely voluntary thing. So I think all of you would be aware, कि बहुत सारे लोगों के फेक आईडीज बनते हैं, किसी का अकाउंट्स हैक कर देते हैं उन लोग. ओके, किसी को डिफेमेशन वाला मेल आ जाता है. There are so many cyber frauds which are happening, right? Now most of the time the victims do not want to file a police complaint, or even if they want to file a police complaint, they don't know how to go about doing it, but they want to catch this. So what we need to do is we also need to create certain IDs. So using these IDs, we can open communications with these IDs. Okay, and we will teach you. Basically what we want is we need volunteers who will help us to catch this kind of people on cyber. बेसिकली साइबर बुली कर रहे हैं, साइबर स्टॉक कर रहे हैं, फेक अकाउंट बना के रखा है, कोई डरा रहा है, कोई धमका रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है. Okay, so we will need volunteers who will help us to catch this kind of people. So volunteers in the form, well, somebody who will open to communication. So अगर आप लोग को सोशल मीडिया में बहुत मतलब well versed with social media and you can communicate with strangers and take out the information or something of that sort, so IDs and everything. So we will teach you. It is free. Okay, we don't charge. Don't charge. It's a volunteer. Don't charge. But we'll need people those who can help catch us this kind of. So it's a voluntary thing. If anybody of you are interested, okay, you can. I'll share the details and get in touch with me, and we'll teach you how to do it. Up to you. But if you're open to help us in from the background, or even open to communications, chatting and all, then let us know. Basically. So majority of the time, this would all be victims of cybercrime. जिनका या तो पैसा गया होगा, या जिनका अकाउंट हैक हो गया होगा, या जिसका फेक आईडीज बना होगा, या कोई ब्लैकमेल कर रहा होगा. सो हमें उन लोगों को हेल्प करना है बेसिकली. Okay, so again, as I said, it's a volunteer thing. Up to you. If you want, we will teach you, we'll guide you, and then you can help us basically. Okay. This is the second part. I said no cybercrime, how to catch the hackers basically. Okay. Now, since the topic is of cybercrime, I mean financial frauds. So what I'm going to do is I'm going to share with you a Central Vigilance Commission करके है. What they have done is that, and they have done analysis of the top 100 frauds by Central Vigilance Commission, न्यू दिल्ली. मतलब इंडिया में टॉप जो बैंकिंग फ्रॉड्स हुए थे ना, उन्होंने उसका एक लिस्ट कंपाइल किया था. लिटिल बिट ओल्ड, October 2018. But if you want, I will share you this this entire case studies and everything like that. So you will get a fairly good idea कि कौन से इंडस्ट्री में कैसे टाइप का फ्रॉड हो रहा था और लोगों ने क्या क्या दिमाग लगा के फ्रॉड्स किए करके. एंड दिस हैज बीन कंपाइल्ड बाय CVC, by the bank, like one of the top agencies in India basically. So this will be really interesting case studies for you to go through. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कैसे टाइप का फ्रॉड हुआ है, डिस्काउंटिंग ऑफ चेक्स में, ट्रेडिंग में, एविएशन में, सिक्योर प्रोजेक्ट्स में, सर्विस में, मतलब मीडिया में, so they have taken out various domains and उसमें कैसे कैसे टाइप के फाइनेंशियल फ्रॉड्स हुए उसका पूरा लिस्ट दिया है, case studies and examples. So basically just to get a fair idea as to what kind of brains and what kind of frauds have been happening over here. So I'll be sharing with this. Go through it if you're really interested. It's a very good learning and very good insights have been given over here. Okay, so yeah, okay, my time is also up. No, I still have a little bit of time, but yeah, now I'm open for question answers also. I've got one more point to cover, but before that, anybody got any doubts, any questions, please ask me. Okay, this is my email ID and this is my mobile number also. Okay, so मतलब जिसको भी वो volunteer के लिए help मतलब volunteer करना होगा, you can WhatsApp me over here. And those who are interested in learning ethical hacking or cybercrime also, you can contact me over here. Okay, Sachin, there is a very interesting question which is thrown at you. हाँ. What can go wrong if I join you? See, honestly speaking now, I'll be very open about this.
The knowledge which you are going to give you, it is like I'm going to sell you one knife. Okay. Now you can use the knife to cut vegetables and make beautiful salads, or you can use the same knife to go and kill someone. So from our point of view also, we also have this fear कि हमने आपको सिखा तो दिया, but what will you do if we give you this knowledge? You know, but yeah, what can go wrong is that depends if you're not very careful or if you're not cautious enough, if you're going to target and hit somebody, but if you don't know how to protect, see, please understand. मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ. I can teach you how to attack into Wi-Fi. ओके, बाजू वाले का वाईफाई, आजू बाजू वाला वाईफाई, किधर भी जाओगे तो मतलब हैक होगा नहीं होगा पता नहीं, बट आई कैन टीच यू. तो मुझे बात बताओ, वुड यू लाइक टू गो एंड अटैक योर नेबर्स वाईफाई, बट पता चला नेबर ने भी मेरा कोई सेशन अटेंड अटैक, राइट? सो डोंट गो एंड आउट. पहले अपने आप को बचाओगे, अटैक करना सीखो. व्हाट वुड यू लाइक टू? You'll save your skin first. परफेक्टली राइट. पहले अपने आप को बचाओ. नहीं, फर्स्ट फर्स्ट क्या करना है, अंडरस्टैंड द गोल्डन रूल ऑफ एक्ट. पहले अपने आप को बचाओ. तो द पॉइंट इज वेरी सिंपल. We will teach you how to protect yourself. But if you're not very cautious enough, if you get carried away, then there is a good possibility that you might end up exposing yourself. So that is one thing. But trust me, we are on the good side of it. So nothing much can happen. This is from my side. This is my security. This is my assurance to all of you. But if we are going to teach you, and if you end up doing something on your own, then even we cannot do it. See, because majority of the time, if you heard from ma'am also, we have worked with police, we have worked with lot of law enforcement agencies. तो ऐसा नहीं कि हम लोग को शौक चढ़ता है कि चलो जब तक सामने वाला विक्टिम आके हमको कुछ बोलेगा नहीं, तब तक आके हम लोग नहीं. We don't indulge. I mean, honestly speaking, we don't even have that kind of time. And see, I'll be very frank. We do not have time to initiate communications. मतलब कितने लोगों ने फेक आईडी बनाए, अभी हम लोग बैठ के थोड़ी उसको चैट करेंगे, उसको कम्युनिकेट करेंगे, इतना टाइम नहीं है. इसके लिए हम लोग को वॉलंटियर्स चाहिए. इसके लिए पुलिस में बोलते हैं सचिन में बैठ के क्या उसका इंस्टाग्राम में मैसेज भेजूंगा उसको, नहीं, दे डोंट हैव टाइम. That is the reason we need people like you, youngsters who can communicate, youngsters who can help us to catch this. So yeah, that is the reason we are opening up this volunteer thing. So in many colleges, especially girls colleges, so we have this WhatsApp group only where girls know that in case अगर उनके साथ कुछ fraud होता है, whom to communicate, whom to go and talk with, so they know that there is a good level of expert people who can guide them also. So I am telling you from my side, I can give you a lot of assurances, but then I also hope that you will not misuse this knowledge. Oh, that's good. I'll find out, Sachin, from the students, in case if students want to learn, we can form a group and we could Yes. probably run the cyber security certificate course in our college itself through you. That will also do, ma'am. Yeah. So there are two things, as ma'am is suggesting, for those who are interested to make a career, start with a small basic foundation course. Good that the college is supporting. Okay, so you will get some good idea as to what this domain is all about. If not that, if somebody is only interested to volunteer, which is also free, you can help us to catch this seminar. So volunteer wala thing mein, we will teach you few things only from the point of view of catching it. And for those who want to do the course, what ma'am is also saying, we can do that basically. Yeah, sure. So we will definitely do this. Someone has asked Aisha, who is doing these attacks on different country? Is it from the same country or someone else? Everybody, Aisha. Generally, majority of the time, good attacks are sponsored by the government itself. Like I hope you all understand. Even governments are interested in knowing other governments' data, basically. And then, of course, there is local people also, those who are interested in going into somebody's personal accounts or, somebody's websites or companies or something like that. So, unfortunately, the answer is everybody is attacking. The government, the organizations, the corporates, and even the local. True. So, that was very, very informative and very educative. It was for the students. And mainly what is more important is to save our own, at least if not anything, our privacy as well as our finances. It's very important. And that you cleared so beautifully in today's session on not to click on any of the link and what mistakes people generally do, even when you get a SMS, and what could actually trigger for someone to hack your phone.
all this you have said so beautifully. But at the same time, I would say, Sachin, this 1 hour session may not be enough for anybody to understand in depth about, because there's a lot of technicalities involved in it. So I request you, and I will organize this with the students who are interested to do this cybersecurity certificate course in our college itself. We will organize that through Sachin Dedhia, who could run the classes for our college. Now that colleges are opening up, maybe during weekends or something, we could organize that. Is that okay, Sachin? You will be able to help us, our students? Yes, ma'am. Definitely, ma'am. Okay. Yes. Thank you so much for your good time and for all the information. Students, we will definitely run the certificate course in our college itself through Sachin Dedhia, who is wonderful in giving you all the minute details. But when you do the course, I'm sure it will go much more in depth for you to learn. Now, before we conclude, we have with us Professor Ravi Prakash Jaiswal, who is our IT head. Now, he will be extending the vote of thanks for today's session. Over to Ravi. Yes, ma'am. Very good afternoon to the respected resource person, Mr. Sachin Dedhia, the Managing Committee, Director Dr. Rajeshwari Ravi, Principal Dr. Rajeshwari Govindappa, teachers, and my dear students. It gives me an immense pleasure to deliver the vote of thanks for today's webinar. I, Assistant Professor Ravi Jaiswal, on behalf of Ghanshyamdas Jalan College of Science, Commerce, would like to propose a vote of thanks to our speaker, Mr. Sachin Dedhia. Thank you, sir, for such an enlightening presentation on financial crimes and frauds. We have learned a lot about the various cyber attacks, how to use computers, mobiles, and internet safely, the do's and don'ts, how it works, and the importance of it in this session. We are really grateful to learn about the financial crimes and frauds from you, sir. I also would like to show my gratitude to our managing committee, President Shri Shyam Todiji, Secretary Shri Nirmal Junjunwala ji, Convener Shri Babulal Todiji, Director Dr. Rajeshwari Ravi, Principal Dr. Rajeshwari Govindappa, for taking an initiative to host and organizing Wisdom webinar series with this new ideas and constant supports. Thank you to all participants for attending this webinar. Dear participant, dear student, please note the feedback link is being provided in the chat box. Only after the filling out the form any certificate of the participation will be provided to you all. Thank you very much. Thank you so much, Sachin, and to all the audience. One important thing we should keep in mind after hearing you out is not to click, take a note, not to click on any of the link that is provided, and don't respond to any of the messages which you give through SMS. These days, not only for refund of your income tax, but they are also coming up with providing jobs and asking you details and filling up all those. So don't even bother. There are no free lunch served in today's world. So that is the reason. Please keep in mind, anyone trying to offer you something free, it's not free. It is going to cost you very dearly. So let's all keep that in mind, that not to respond to any of the SMS. And as Sachin already said, that even that boyfriend, girlfriend, or whatever, someone approaches, do not blindly believe in anyone, and please do not pass your personal details to them. With this, we can end this meeting. Thank you, Sachin. We will get in touch with you again. And my students, dear students and staff, thank you for being a wonderful audience always. Thank you so much.